बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल है टार्क, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ टार्क? सो बाय डेफिनेशन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज नोन एज टार्क। इट मीन्स दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी and it rotates about some fixed point, so we know that this is known as torque. The effect of a force to rotate an object about some fixed point is known as torque. अब टार्क कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले इससे मुतालिक कुछ कंसेप्ट्स हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1, पॉइंट ऑफ रोटेशन। इसका मतलब है द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। It is also known as pivot point. For example, this is an object and this body can rotate about this point, so इस point को हम point of rotation कहते हैं। Second one, position vector. Position vector, this is the displacement of the point where we apply the force with respect to the point of rotation. For example, ये एक point है, इस point P पर हम force apply करते हैं। So the displacement between these two points, point of rotation and point of action of force, इस displacement को हम position vector कहते हैं। So it is denoted by R, and this is the displacement between point of rotation and point of action of force. Point P is point of action of force, यहाँ पर हम force apply करते हैं। Third point is line of action of force. Line of action of force. It is defined as the line along which a force acts. For example, in this direction we apply the force. This is the force. So this line is known as line of action of force. This line is known as line of action of force. The line along which a force acts is known as line of action of force. And fourth one is moment arm. Now what is moment arm? It is the perpendicular distance between the line of action of force and the point of rotation. यहाँ से अगर हम perpendicular draw करें, so this is the least distance between point of rotation and the line of action of force. So this distance is known as moment arm. अब इन टर्मिनोलॉजीज़ की रोशनी में हम टार्क जो है एक्सप्लेन करते हैं। जब एक बॉडी पर मुख्तलिफ फोर्सेस एक्शन करते हैं तो कौन सा फोर्स बॉडी को रोटेट करेगा अबाउट द फिक्स पॉइंट। सो वो फोर्स बॉडी को रोटेट कर सकता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। दिस इज़ द बॉडी which can be rotated about this point, और इस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। नाउ आई अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन।
Now the line of action of this force is passing through this point of rotation, so this force produces no torque. और ये इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज़ नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, सो ये फोर्स जो है वो टार्क प्रोड्यूस कर सकता है. सो अ फोर्स कैन प्रोड्यूस टार्क्स इन एन ऑब्जेक्ट हुज लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन. So we can define also torque that a force can produce or a force produces torque in an object about a fixed point whose line of action does not pass through the point of rotation. तो इस फिगर में दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन. यहाँ पर force is acting in this direction. This is what is the position vector, and the line of action is this one. So this force can produce torque in this body about this point O. अब ये torque positive भी हो सकता है, negative भी. When the rotation is anti-clockwise, so that is positive. When the rotation is clockwise, so that is negative. Now what is the angle between R and F? So the angle between these two vectors is this one. This is the angle between R and F. Now अगर हम force को resolve करें rectangular components में, so this is one component, this is other component. अब ये component is F cos theta और ये इसका line of action passing through the pivot point, so it produces no torque. तो यहाँ जो effective component है वो ये है, and that is F sin theta. So from observation, greater the magnitude of this position vector, greater will be torque, and greater the perpendicular component to R, so greater will be. So mathematically the magnitude of torque is equal to the effective side R and F sin theta. This is the effective component of the force. अब torque जो है एक vector quantity है, so we can write in vector form as torque is equal to RF sin theta n unit vector. Or n unit vector we know that it will be perpendicular to the plane of R and F. और यहाँ पर ये क्या होगा कि उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर में भी आउटवर्ड इनवर्ड, तो राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं. तो यहाँ अगर रोटेशन एंटी क्लॉक है तो दिस विल बी आउटवर्ड, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है दैट विल बी इनवर्ड. सो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ. तो यहाँ ये जो फोर्स है इट कैन रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर R क्रॉस F, सो द टॉर्क इज पॉजिटिव. अब इक्वेशन 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू R साइन थीटा इनटू F. अब ये R साइन थीटा इसको मोमेंट आर्म कहते हैं. दिस इज़ R. अगर R को हम रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. So this component is R cos theta, or this component is R sin theta, and this is what is the moment arm. The least distance between line of action of force and the pivot point is known as moment arm. So this is R perpendicular and it is known as moment arm. So magnitude of torque is also equal to the product of moment arm and force.
सो दैट इज़ वाई यहाँ पर टार्क मैग्नीट्यूड मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, तो इसलिए हम टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यानी इस वजह से कि यहाँ मोमेंट आर्म फोर्स का प्रोडक्ट ये टार्क के बराबर है, तो इसलिए टार्क इज़ आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। ये एक्चुअली था मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, लेकिन सिंपली हम इसको इस तरह प्रोनाउंस करते या लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो अनदर नेम ऑफ टार्क इज़ आल्सो मोमेंट ऑफ फोर्स, और फिर मोस्ट कन्वीनियंटली हम सिंपल इसको मोमेंट भी कहते हैं। टार्क इज़ आल्सो नोन एज मोमेंट। अब टार्क कब मैक्सिमम होगा? जब ये फोर्स परपेंडिकुलर हो आर को, यानी आर टोटली जो है मोमेंट आर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर टार्क मैक्सिमम होगा। सो फॉर मैक्सिमम टार्क थीटा इज़ 90 डिग्री और साइन 91 के बराबर है। तो मैक्सिमम टार्क मैक्सिमम होगा जब पोजीशन वेक्टर और फोर्स जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। और इससे एस आई यूनिट हम टार्क का लिखते हैं कि एस आई यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और यहाँ स्पेस होगा इसका यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर इज़ द एस आई यूनिट ऑफ टार्क। टार्क के एग्जांपल जो है, हम जितने भी नट्स होते हैं इसको टाइट करते हैं तो इसमें टार्क अप्लाई करते हैं, इसको लूज़ करते हैं इसमें टार्क अप्लाई करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं टार्क अप्लाई करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं टार्क अप्लाई करते हैं, अ कार टेक अ टर्न हम टार्क अप्लाई करते हैं, और हैंड पेन को शेक करने के लिए हम आल्सो टार्क जो है वो अप्लाई करते हैं। सो दिस वाज व्हाट अबाउट द टार्क।